Assalamu alaikum. New Oxford Modern English Book 4 based on Single National Curriculum 2020. ये न्यू सिलेबस है. इसका यूनिट 1 द स्पिरिट ऑफ रमदान. आज हम इसकी रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे. काइंडली आप अपनी बुक्स भी ओपन करें और वहाँ से देखते हुए मेरे साथ रीडिंग करें. चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को भी प्रेस कर दिया करें. इस तरह मेरी हौसला अफजाई होती है. यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैं रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन की ये जो वीडियो बना रही हूँ ये 2 पार्ट्स में बना रही हूँ. ये पार्ट 1 है. तो स्टार्ट करते हैं. द स्पिरिट ऑफ रमदान, रमज़ान की रूह. प्री रीडिंग. व्हाट इज़ योर मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ रमदान? आपका रमज़ान के हवाले से सबसे मेमोरेबल यानी यादगार एक्सपीरियंस, तजर्बा कौन सा है? शेयर विद योर फ्रेंड्स. अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. वर्ड्स टू नो. जेनरोसिटी, इसका मतलब होता है फराख दिली, फ्याजी, सखावत. चैरिटी, खैरात. स्पेक्टिकुलर, शानदार. कास्ट, ज़ात. प्रोमिनेंट, नुमाया, मुमताज़. हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम is known for his generosity and charitable behavior. रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम अपनी फ्याजी, अपनी सखावत यानी अपने फ्याजाना किरदार के लिए मशहूर व मारूफ हैं. To be closer to Allah subhanahu wa ta'ala, we may look to Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam as a role model. अल्लाह सुब्हान ताला के नज़दीक होने के लिए हम हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम की ज़ात को एक काबिल तक़लीद मिसाल के तौर पर देख सकते हैं. ही सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम said that through charity Muslims can find themselves closer to Allah subhanahu wa ta'ala. आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका खैरात के ज़रिए मुसलमान खुद को अल्लाह सुब्हानहू ताला के ज़्यादा नज़दीक पा सकते हैं. ही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम encouraged new Muslims to spend time and enjoy meals with their non-Muslim family members and not break ties with them. आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम नौ मुस्लिमों को तरगीब दिलाया करते कि अपने ख़ानदान के गैर मुस्लिम अरकान के साथ वक्त गुजारें और खाना खाएं और उनके साथ रिश्ते ख़त्म ना करें. ही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम also urged his followers to help their neighbors, family and anyone in need. आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम अपने मानने वालों को अपने पड़ोसियों, ख़ानदान वालों और जो भी ज़रूरतमंद हो उसकी मदद करने की तलकीन किया करते थे, उस पर ज़ोर दिया करते थे. These are things that all Muslims must try to do, especially during Ramadan. ये वो काम हैं जिन्हें करने की कोशिश हर मुसलमान को करनी चाहिए, ख़ुसूसन रमज़ान के दौरान. Festivals such as Ramadan and Eid are observed and celebrated by Muslims in countries around the world. मुसलमान रमज़ान और ईद जैसे फेस्टिवल्स यानी त्यौहार दुनिया भर के मुल्कों में मनाते हैं. शेयरिंग अफ्तार्स इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में अफ्तार किस तरह शेयर किया जाता है? पाकिस्तान में मिल बांटकर अफ्तार करना. रमदान सेलिब्रेशंस इन पाकिस्तान आर स्पेक्टिकुलर. पाकिस्तान में रमज़ान शानदार अंदाज में मनाया जाता है. पीपल होस्ट ह्यूज डिनर्स फॉर द पुअर एंड नीडी.
لوگ غریبوں اور محتاجوں کے لیے ڈنر یعنی رات کے بڑے بڑے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں. These are set up on the roadsides where anyone can join in. یہ سڑکوں کے کنارے لگائے جاتے ہیں جہاں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. All are welcome to these dinners and given food. ان کھانوں میں ہر کسی کو ویلکم کیا جاتا ہے یعنی خوش آمدید کہا جاتا ہے اور کھانا دیا جاتا ہے. With the large amounts of food present for anyone to eat, the generosity is clear. ہر کسی کے لیے کھانے کی بڑی بڑی مقداروں کا دستیاب ہونے سے سخاوت کا صاف اظہار ہوتا ہے. This custom is a display of the best characteristics of humankind. یہ روایت، یہ رواج انسانی فطرت کے بہترین اوصاف کا اظہار ہے. In Ramadan, we fast, share سحور and افطار with our families. رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری اور افطاری کرتے ہیں. At the end of the month of Ramadan, ماہ رمضان کے آخر میں we have a big celebration of عید الفطر. ہم عید الفطر کا بڑا جشن مناتے ہیں. We give up bad habits during Ramadan and we spend time with our families. رمضان کے دوران ہم بری عادتیں چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. We pray and do good deeds. ہم عبادت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. Good deeds ہوتے ہیں اچھے کام. At Eid, we are thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us strength. عید کے روز ہم خود کو طاقت دینے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. We also give gifts and donate to charity. ہم تحائف اور خیراتی کاموں میں چندہ بھی دیتے ہیں. Islam is a religion of peace and tranquility. اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. It teaches its followers to be kind, dutiful and live in harmony with their neighbors regardless of their caste or religion. یہ اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مہربانی، فرض شناسی اور امن و سلامتی کے ساتھ رہیں، خواہ ان کی ذات یا مذہب کچھ بھی ہو. And during Ramadan, by following the practices of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatamun Nabiyyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, the world gets to see the true Islamic teachings. اور رمضان کے دوران رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کی پریکٹسز یعنی ان کی سنتوں پر عمل کر کے دنیا کو اسلام کی حقیقی تعلیمات دیکھنے کا موقع ملتا ہے.